और आइए आपको सीधे ले चलते हैं संसद की ओर, जहां लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। 19% of world children ranks 113 out of 176 in well-being of children according to the End of Childhood Index. In 2022, child abuse cases surged by 8.7% and approximate 55% of children in India experience some form of abusing according to NCPCR study. India's child population is vulnerable with 28.9% falling victim to sexual crimes as per NCRB report 2020. Additional child rape cases have increased by 96% between 2016 and 2022. As per CRY analysis of NCRB data, also India accounts for strategizing 40% of global child marriages according to the National Family Health Survey. Speaker sir, I would like to ask Honorable Minister for steps taken by the government to bring India among the best 50 performing countries in child well-being index with a timeline for the completion of the same. माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मिशन वात्सल्य के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई मिशन वात्सल्य योजना का उद्देश्य भारत के हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना है। इसके लिए ऐसी संवेदनशील, समर्थनकारी और समकालिक इकोसिस्टम स्थापित करना है जिससे उनका पूर्ण विकास संभव हो सके और कोई बच्चा पीछे न छूटे के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाए गए इस योजना के अंतर्गत कठिन परिस्थितियों में फंसे बच्चों को सहायता एवं सहारा दिया जाता है एवं उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाता है और विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों के समग्र विकास हेतु उपाय किए जाते हैं। सरकार की ये सोच है कि कोई भी बच्चा जो मेन स्ट्रीम से अगर वो हट गए हैं तो उसके लिए हमारे मिशन वात्सल्य के माध्यम से हम उनको हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं ताकि बच्चा Trivedi demanding to discuss the issue of corruption in Karnataka Maharishi Valmiki Scheduled Tribes Development Corporation. All of them belong to the, all of them belong to the ruling party. One second, please. All these 267 notices are from the ruling party. Sir, these notices ignore, one second, take your seat. These notices ignore my directives which were explicit. There may be issues of great import. Many have been raised under Rule 267 earlier. I declined all of them. One second, sir. I will not allow anyone to speak on 267. Please. And no issue which is otherwise of great urgency and contemporary relevance calls for invocation of Rule 267. This invocation, notwithstanding your feelings on the issue, does not come up to the requirement of Rule 267. And all the more, Mr. Iran Kadadi, you have already raised this issue. Once again, raised this issue. Already raised this issue in 0 hour. No. Honorable members, I decline Rule 267. No. And no. I would urge the honorable members.